opportunity. तो सर ये बताइए कि अबाउट CS है क्या? राइट, देखिए CS को सबसे पहले मैं टर्मिनोलॉजी दूंगा एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉरियर। ठीक है, हमारा जो इंस्टीट्यूट का एक्ट है, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, उसमें सेक्शन 2 में हमारा कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है। कंपनी सेक्रेटरी इज़ ए पर्सन, राइट, हु इज़ अपॉइंटेड इन ए कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। जनरली कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी में जाता है तो उसका दायित्व होता है कि सबसे पहले वो वहाँ पे कंप्लाइंसेस को मेक श्योर करे कि वहाँ पे कंप्लाइंसेस हो रही हैं उस कंपनी में, अपने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करे, अपने बोर्ड को वो सही गाइडेंस दे विद रिस्पेक्ट टू दी लॉज एप्लीकेबल ऑन दैट कंपनी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी हैं, राइट। दे वर्क एज ए, you can say, in-house counsel also for major of the companies, right? Then they are working as a KMP also, key managerial person, right? They are sitting with the board also, right? So as on date, if I say company is the both right hand and left hand of the company secretary is the right hand and left hand of the company. And to summarize it, हमारे जवान देश के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी हैं। कंपनी सेक्रेटरीज हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉरियर हैं जो कंपनीज़ में जाके, ठीक है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी देश की इकनॉमी ग्रो करे। सही है। CS के अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं ना मिशन पे आऊँगा। एक हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन है, सत्यम वद धर्मम चर, स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय लॉ। अगर आप इस मोटो को आप ढंग से अगर आप एनालाइज करोगे तो इसमें ही हमारे CS के लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्लियरली मेंशन्ड है। मैं इसको थोड़ा सा समराइज और बेटर वे में करूँगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो आज सबसे पहला जो वो अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, वो स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। स्टेक होल्डर्स लुक अप टू दैट कंपनी सेक्रेटरी, दैट कंपनी सेक्रेटरी सिटिंग इन दैट कंपनी विल मेक श्योर that there is no non-compliance in that company, to make sure that there is no fraud happening in that company, right? If something is happening, then that company secretary should act as a whistleblower, right? Secondly, he is a kind of a bridge between the stakeholders and regulators also. Now regulators are also very much active from last 10-15 years, right? So they make sure that there should be a smooth passage between the regulators and the company, right? Third, they are taking their board into the confidence, right? Their board, the board of directors are looking up to the company secretary. Yes, this is that person who will sail us through the tough road ahead, right? And who will guide us in a better perspective when and ever needed, right? So there the importance of company secretaries, that is the role of the company secretary. But when you talk about company secretary in practice, yes, the same obligation is on them, that when they are doing their playing their or doing their performing their duties, like doing secretarial audit, like doing internal audit, like advising the clients on FEMA, doing the valuation, they should be doing with proper ethics. There should be no, you can say, manipulation of the figures. There should be no manipulation of the information, so that those reports give the or you can say sanctity of the company, right, and their progress, right. Their board report give the progress, so that can be presented well before the stakeholders also and regulators also. तो सर ये बताइए, CS का प्रोफेशन इन लास्ट रिसेंट ईयर में क्या इवॉल्व हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या डिफरेंस है? देखिए, चेंजेस तो एक अलग जर्नी ट्रैवल की है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन ने, राइट। एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं अपनी बात करूं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन फ्रंट ऑफ ड्यूरिंग माई जर्नी ऑल्सो. वी हैव चेंज आवर अप्रोच, आई बिलीव, फ्रॉम administrative approach to a strategic approach. We have started adopting technology in our work, right? Gradually, there has been more focused on sustainability. ESG एक
बड़ा न्यू वर्ड आया हुआ है कॉर्पोरेट्स में, इवन इन दी दिस कॉर्पोरेट साइड। तो ईएसजी में भी कंपनी सेक्रेटरी का, ईएसजी इम्प्लीमेंटेशन में भी, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद आपका आजकल ना साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं, राइट। तो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग, एक नया हमारा एक्ट भी आने वाला है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि रेगुलराइज होने वाला है इन दी फेब ओनली। तो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग्स of the company, right? And representations. Now we are representing before the tribunals, right? Various tribunals. We are representing our clients, right? Then, according to that, further we are even had increased the shareholder engagements also, right? Earlier there was the trust from the shareholders, well, very less, right? But now, due to increasing the obligations and responsibilities on the company secretary, the shareholder and stakeholders engagement has increased, right? So it has been a very, you can say, impressive journey of this profession in last recent years, right? If I talk about particularly, there are few, you can say, initiatives which hasn't been taken by government of India. Like I talk about Vasudhaiva Kutum, Digital India, Atmanirbhar Bharat, Make in India. So if we particularly talk about these initiatives, what are these? Like Kutum, Vasudev Kutum, it's like complete world is one family. So as a company secretary, we are helping our companies to go global, right? Atmanirbhar Bharat. We are making our companies' policies and making them compliant to become Atmanirbhar, to contribute in the economy of the country. Make in India initiative. Earlier, most of the companies, they were having their manufacturing hub in different parts of the other countries. But now most of the manufacturing hub are in India itself. So there our role comes into the picture. There are a lot of laws, environmental laws, right? Your industry-specific laws, where company secretary expertise are coming into picture. And then yes, digital India. Everything is digital at this time, right? Even we can see our Prime Minister, right? He is inaugurating Vande Bharat or other trains from his own office, right? Through digital media, right? So Digital India has been a great initiative again. So if you'll see, all this initiative had a which has been, you can say, inaugurated by the government, has a very vital role, right, for the company secretaries. Right, they are working behind the curtains. Just the thing is that they are working behind the curtains, and they are making sure that a good corporate governance is getting implemented.